Welcome to Beyond Classroom program. Today's topic is very special. This is GST 2.0. Why there is a need of the GST reforms. Let us discuss with the panel and experts of the economy. We have Dr. Vibhas ji. Welcome Vibhas ji. And we have Mr. Reddy. Both experts and both pillars of the economy at Next IAS. So Vibhas ji, there is discussion that GST 2.0 will benefit to the people. What exactly GST 2.0 is? Right, sir. So GST 1.0 was in 2017, July, when we introduced. And it has been reformed a lot. Initially, when it was brought in, there was a lot of problem, but over the period we have reformed. अब सर हम ये भी देख रहे हैं that the collection in GST has gone up to an average of around 2 lakh crore per month. Correct. Which is giving government good tax collection. In fact, April to 2.34. Went to 2.34. अब ये बात हो रही थी that we have 4 tax rates in GST if we remove the 0% part. Otherwise 0, 5, 12, 18, 28 plus cess. So ये बात जरूर थी that we had talked about one nation, one tax, uniformity. So ये बहुत दिनों से बात थी that let's now try rationalizing the tax rate. तो अभी ये इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रपोजल ये बोला पब्लिकली, बट दिस मीटिंग वाज हैपनिंग एंड द टॉक्स वर हैपनिंग विद द अदर मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल फॉर सम टाइम नाउ. सो नाउ जीएसटी 2.0 इज most important thing in that is that the tax rates will be, the tax slabs will be now reduced from 4 to 2. So 5% and 18%. तो एक अच्छी बात ये होगी कि 28% तो पक्का चला जाएगा. Okay, so do you see that the 28% slab will be abolished? 28% will be abolished, but then they say that they will keep some commodity under sin tax. अब सर ये मुझे कम समझ में आता है ये बात एज एन इकोनॉमिस्ट. 40% sin tax. और सर 40% sin tax में अगर आप टबैको या ऐसा कुछ डालते हैं तो फिर भी समझ आता है, जबकि मुझे वो भी कम समझ आता है. सर मैं उसका रीजन बता दूंगा अपने सुनने वालों को. दैट टैक्सिंग टबैको may give good revenue to the government but does not control tobacco's consumption. क्योंकि सर जिसको लत लगी है वो 40% हो या 50%, वो बेचारा गरीब आदमी और महंगा खरीद करके खाएगा या पिएगा. सिगरेट अगर पीना है तो वो लत लगने की बात है. वो उससे अच्छा होता है कि डिमांड कम करा दीजिए, कि अगर आपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है अबाउट द प्रॉब्लम्स तो डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट खुद बंद हो जाता है. और दूसरा जैसे कार्स हैं सिन टैक्स, लग्जरी कार्स, चॉकलेट इन सिन टैक्स, ऐसी बातें हो रही हैं. अभी इसमें एक चीज और सब मैं सुनने वालों को बता दूं दैट व्हाटएवर डिस्कशन वी विल डू इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड दे आर नॉट एक्चुअल. वी विल एज ऑफ नाउ हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता. और सर जब तक जीएसटी काउंसिल नहीं मिलती तब तक तो नन ऑफ अस नो. पर सर ये सबसे अच्छी बात उसमें इसमें ये लग रही है सर दैट इफ वी कैन मेक इट टू 5 and 18 देन द कॉम्प्लेक्सिटी of paying GST, getting input tax credit, sometimes inversion of duty, इनके कम करने के chances काफी हो जाएंगे. Reddy, the objectives of the introducing the tax reforms क्या हो सकते हैं कि after 7 years, मतलब 17 के बाद around 8 years, now government had felt necessity to bring the tax reforms. So if you see the larger context, if you see the budget of 25-26, sir, government announced reduction of income tax, sir. So indirectly they want to simplify the tax structure in our country. So it is a continuous process. Right. So number 1, sir. Number 2, if you see the global context right now, sir, across the globe there is an uncertainty about the global trade. So if you see the India and America, especially the trade relation now, so they are imposing the tariff on Indian products now. So if external demand is less, so domestic demand also little bit weak, sir. So we want to boost the domestic demand. So if any taxation reform, there are 3 things, sir. About individuals or the people, then government and the businessman. So what are the benefits the households like you and us, you and me? Number 2 for the government, number 3 for the businesses. Now if you see the GST 2.0 main objective, sir, simplification of tax structure. As I sir told, they want to make 3 structure in simple terms like 5 and 18 plus sin tax. That is the beauty here is they are removing the cess, sir. Traditionally we have 28 plus cess. That is combining around 44-45% in some goods. Oh, this I was not aware. That is the reason. Total becomes more than 40. Yes, sir. It becomes 42, 44 also. Now they want to keep a 40% slab. Even it is a very complex, technically speaking, because there are so many countries in the globe, they have one GST rate, sir. But in India, number 1, simplification. Right. Number 2, sir, right now, I will give example. If you are eating normal local restaurant food, sir, the GST rate on thali is 5%. If you got some goods, hotels, for 12%. It is vary from place to place.
Then again they have to, let's say you have to 4 or 5 chains, sir. One is in Karol Bagh, one is in village. So very tough to develop mechanism to invoice these things. So now they want to simplify those things. Number 2, sir, right now there is inverted duty structure, meaning they are imposing high taxes on the raw materials, less taxes on output, sir. They are unable to get their input immediately. Their capital, that is a running capital, is stuck with government only. So they want to improve this also. I have one apprehension in this entire 2.0 initiative. As of now, government has implemented GST mandatory only when the turnover of the individual or the company is more than 20 lakhs per annum. Yes, sir. Do you see that this base also will be reduced because they are reducing the tax rate? Sir, as of now, there is no proposal, sir. But in the long run, they may think. But right now, the group of ministers, they have a mandate. Now, mostly they are focusing on rate structure, rate rationalization. Slabs. Slabs, sir. Mostly they are focusing now slabs and automation, like technology. And most importantly, sir, how to benefit our MSME sector and exports. तो इसका मतलब है कि this 2.0 will be on positive note. Yes, sir, no doubt. It will benefit the economy in the long run, sir. Short term, there may be a revenue loss, little bit. Okay. Sorry, मैं एक बात और ऐड करना चाहता था सर, that when it comes to the current scenario in which India is trying to get GST 2.0, तो जैसे रेड्डी जी ने बिल्कुल correctly बोला that we have this import duty that is being imposed by America. इसमें एक फायदा क्या है सर, that most of our sectors which will get affected, जैसे टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल में क्या है सर, that we have a very scattered supply chain. जैसे जब कॉटन ग्रो हुआ इन पंजाब, then थ्रेड बनेगा इन गुजरात, parts of महाराष्ट्र, फिर वो थ्रेड क्लॉथ बनेगा इन तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र which is the western महाराष्ट्र पार्ट, एंड देन वो क्लॉथ का गारमेंट जो है वो एक्सपोर्ट होने वापस चला आएगा इन गुजरात एंड महाराष्ट्र पोर्ट. तो सर इसमें क्या होता है that हर पॉइंट पे जीएसटी लगता है. और इसमें एक दिक्कत क्या आती है सर, दैट गारमेंट पे 28%, कुछ गारमेंट्स पे पॉलिएस्टर, रेयॉन, इन पे 28% का जीएसटी था. तो अब सर अगर हम 10% भी कमी कर दें, अगेन वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट अगर कर दें तो बेनिफिट क्या होगा सर, दैट अगर 50% किसी ने टैरिफ बढ़ाया और 10% मैंने छूट दे दी और उसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ा मिल जाए ज्यादा, तो 15-20% हमारे सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल और सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फार्मास्यूटिकल, इनको थोड़े बेनिफिट मिल जाएगा. सो इट मींस दैट कि on account of the Trump tariff, this could be a thought कि इसको रिफॉर्म करते हैं. क्योंकि सर अच्छा, इसमें मैंने एक YouTube पे ही वीडियो देखा था, उन्होंने वो कह रहे थे that GST reforms won't be sufficient to cover Trump tariff. ये सही बात है सर, but point is that Trump tariff cannot be covered by a single reform. Correct. तो अगर हम लोग multiple reforms करें, जो कि thankfully GST तो बहुत बड़ा रिफॉर्म हो सकता है, then it can counter Trump's tariff and otherwise make India competitive. इसमें एक और भी चीज कहूंगा सर, जो रेड्डी जी ने भी मेंशन की, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. यहाँ क्या होता है सर, दैट आप जब जीएसटी देते हैं अपना, तो आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वो ये है कि जब मैं जीएसटी पे करूंगा तो उसमें मैं डिडक्शन ले सकता हूँ फ्रॉम द ऑलरेडी पेड जीएसटी. करेक्ट. बट अगर मैंने इनपुट पे मान लीजिए 20 रुपीज जीएसटी दे रखा है और आउटपुट पे मुझे 10 रुपीज ही जीएसटी देना है, तो मैं चाह के भी वो बाकी का 10 रुपीज नहीं दे सकता. तो अब ये सर 5 और 18% हैज अ चांस दैट वी विल बी एबल टू रेक्टिफाई दैट. राइट. इसमें जो रेवेन्यू लॉस होने के चांस है, बिकॉज वंस द स्लैब्स विल बी रिड्यूस्ड, 28 वाले 18 में आ गए, 12 वाले 5 में आ गए, so there may be a chance that net revenue collection may come down. Yes sir, there is in fact a research by SBI, again under the assumption that all 28 will come to 18 and all 12 will come to 5. So that research says, अभी सर एक टर्म होता है एवरेज रेट ऑफ ड्यूटी. तो सर एवरेज रेट है कि जैसे कुछ कमोडिटी पे 28% लग रहा है, कुछ पे 18, कुछ पे 12, कुछ पे 5. तो एवरेज रेट निकालते हैं सर, उसमें क्या करते हैं कि सपोज 100 कमोडिटीज पे 10 लग रहा है तो वेट्स अटैच कर देते हैं. दैट ये नहीं कि सिंपल एवरेज निकाला, वेट्स अटैच कर लिए. तो सर वो वेटेड एवरेज ये दिखाता था दैट आइडियली जो हमारा प्री जीएसटी रेट था, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करते थे, दैट एवरेज यूज्ड टू बी 15.5% टैक्स कलेक्टेड. फिर सर जब जीएसटी लॉन्च हुआ, इट केम डाउन टू 14.4%. फिर सर हम सबको ध्यान होगा कि 2019 में गवर्नमेंट डिड सम रिफॉर्म्स और 28% स्लैब से कुछ कमोडिटी निकाल दी. तो सर उस केस में दिस एवरेज रेट केम डाउन टू around 11%. अब सर SBI research says that if this is done, the average rate will come down to 9.9%. Okay. So it is possible there might be loss of revenue. Estimate is up to 1 lakh crore rupees. लेकिन सर उसमें एक और बात भी है. This is under the assumption that GDP of India will remain same.
I mean the transaction. But sir होता क्या है, whenever we reduce the tax rate, more reporting happens. Correct. So if we assume sir, उसमें इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट हम लोग पढ़ाते हैं सर, उसे कहते हैं टैक्स बॉयंसी. तो टैक्स बॉयंसी होता है सर परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी. तो सर होता क्या है कि इफ द टैक्स इज बॉयंट, और जीएसटी ने अभी तक बॉयंसी दिखाई है, Right. तो ये क्या होगा दैट इवन दो रेवेन्यू रेट्स विल गो डाउन, बट आफ्टर दिस रेट स्टेबलाइजेस ड्यू टू मोर रिपोर्टिंग एंड ड्यू टू मोर ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएंगे. जैसे अगर कोई आदमी एक सामान खरीद रहे थे, वो 1.5 खरीद लिए, तो इससे सर टैक्स पेमेंट बढ़ जाती है. सो एक्सपेक्टेड, मुझे ये लगता है, मैंने इस पे थोड़ा ही रिसर्च कर पाया हूं, बट मुझे ये लगता है दैट 1 लाख करोड़ का नुकसान नहीं होगा. इवन इन द फर्स्ट ईयर इट विल बी समथिंग लाइक 30,000-40,000 करोड़. इसका सर मैं एक सपोर्ट एक कारण से भी करता हूं. So it means that may not be more than 3%. नॉट मोर देन दैट. और सर एक और कारण से सपोर्ट करता हूं सर, दैट रादर देन पिकिंग सेक्टर्स एंड गिविंग देम सब्सिडी, इट इज बेटर टू गिव अ यूनिफॉर्म टैक्स रिलीफ टू एवरीवन. सर विनर्स सरकार चूज करे, इससे अच्छा मार्केट चूज कर ले. बेटर रिजल्ट. Reddy, Thing there, sir told us right now the 12% जो slab है ना sir, now they want to make it 5 sir. Almost 99% of items if they will come under the 5%. Then sir right now 28% जो slab है, almost 90% goods comes under 18 sir. 18. उससे क्या estimate जस्ट सर ने बोला 40 to 45,000 crores नुकसान हो सकता है revenue loss. लेकिन सर if you see the consumption sir, there is a Morgan Stanley report है, so our GDP में increase by 0.8 to 0.9% sir. So जब कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली द रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीजेस. सो इनडायरेक्टली people may look in short term like year like that we may lose, but in long run sir it has a multiplier effect in our GDP growth. As you know sir, basics of economy, जब कंजम्पशन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ जाता है सर, ऑटोमेटिक जॉब्स क्रिएट होगा. सो लाइक दैट इन द इकोनॉमी ओवरऑल मल्टीप्लायर इफेक्ट. इसमें मैं एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किए थे कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए, सबके लिए नहीं, इन 2019, और उस वक्त हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 5 लाख करोड़ था, अब 10 लाख करोड़ है. इवन दो रेट्स वर रिड्यूस्ड. So reporting happens better. रिपोर्टिंग हैपेंस बेटर. और सर एक और चीज भी है, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनेस्ट ऑफिसर्स जितने हैं, उनको फिर इजी ऑफ कैलकुलेशन एंड ऑल होता है, सो दे आर एबल टू एडमिनिस्टर मच बेटर. जितना सिंप्लीफाई होगा, Correct. उतना रिपोर्टिंग बेटर होगी, उतना सर कलेक्शन मैं बेटर तो क्लास में एक बात बोलता हूँ बच्चों को कि इंडिया की जो रिचनेस है, एंड ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर आर अ रिजल्ट ऑफ दैट वी डोंट कम फ्रॉम प्लेसेस वेयर lot of money was there, but we could do some good work in India and could make ourselves a little better off. तो सर उसका एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि that India could achieve by liberalizing the rates, not by conservative methods. Conservative methods तो सर 47 to 91 की गरीबी थी. तो reforms ना best example. Yes. Pre-90s our growth was 2 to 3%. Now we are one of the fastest growing economy in the globe sir. Very true. Reddy ji, this GST is a destination based. Yes sir. Now there are two different type of these states. Some are producers and some are consumers. Yes, sir. So by reducing the tax slabs, which producers are going to be benefited or the consumers? Sir, it's very honestly speaking, sir. Again, there is a short term and long term view in economy. Let's say, sir, Gujarat is manufacturing something right now, selling in UP, sir, or Bihar. So now we impose IGST of 50% taken by central government, half will taken by Bihar or UP, sir. Now there is a revenue loss for the Gujarat. So initially we promised the revenue loss states That was for 5 years. 5 years. years. We will give 100% compensation. Central government impose some compensation, says sir. But if it's the data right now, states are overall gaining, sir, because tax base increased, Right. Ease of doing business improved, and one positive impact here, sir. Honestly speaking, now previously we are setting business in Gujarat, sir, because less taxes, sir. But today taxes across the country same, Right. Now, across the country, ease of doing business is a little bit same, sir. So uniform development will happen. Yes. It will reduce inequalities, sir, regional disparities, migrations. Correct. And in the long run, we achieve the sabka saath sabka vikas, that inclusive development also. Yeah, Sir. so I think 5 years back the collection was around 11 lakh crore and Yes, now it has yes. gone to 22 plus. Yes, sir. Yeah, and coming years, sir, it is going to increase more, sir, because everybody is reporting right now, sir. सर इसमें एक और बात भी मैं बोलूंगा सर अबाउट प्रोड्यूसर स्टेट कंज्यूमर स्टेट. व्हेन वी चेक द डेटा, तो सर वहां ये दिखता है दैट द टॉप 5 जीएसटी कलेक्टिंग स्टेट्स इन इंडिया आर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात. अच्छा, then sixth is. एंड देन 6th इज हरियाणा. अब सर यही इंडिया के प्रोड्यूसर स्टेट्स भी हैं. 50% of manufacturing comes from there only. सर एक्चुअली इकोनॉमिक्स एक चीज सिखाती है हमें दैट प्रोड्यूसर्स विल बी द अर्नर्स एंड अर्नर्स विल ऑटोमेटिकली बी लार्जर कंज्यूमर्स. Right.
तो सर अब इसमें जो ये बात उठती है कि कंज्यूमर स्टेट, प्रोड्यूसर स्टेट, वो एक्चुअली सर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होता है नेट प्रोडक्शन, नेट कंजम्पशन। तो सर मान लीजिए मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहा हूँ दैट इफ कर्नाटका प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स and Karnataka consumes 90 units, then Karnataka is a net producer. Bihar produces 20 units and Bihar consumes 40 units. Bihar is a net consumer. Right. तो लगेगा कि Bihar is a consumer state. Right. लेकिन सर Karnataka in total is consuming 90 units while Bihar is consuming 40. So more GST will be going to Karnataka anyways. And one important point, sir, in Northeast India, after the GST benefited a lot, sir. Yes. Because it's the consumption states, but now it is given to the state consumed, sir. So indirectly the purchasing power increases there. Again, more production units will set up. So we may think only manufacturing, sir, but its impact on agriculture, service sector also. So that is the reason it is very tough to say only benefiting consumer states, losing manufacturing states. That is not true, sir. Is it feasible that instead of the now coming to two slabs, there can be a single slab, let's say 12%? Sir, in the long run, sir, our dream is to have one nation, one tax, one market, sir. If you see across the globe right now, majority of the countries have single slab rates, sir, at 12%, 13%, 15%. Do you see that this goal of the government is achieved till now? Sir, we are in the right direction, sir. Yeah. So I will explain, sir. One nation, one tax, one market. It is a principle, sir. Right. But right now, in any democracies, no, sir, we cannot bring radical reforms. So before GST, no, sir, we have a khichdi of taxes. Central government imposes taxes, state government taxes, local government taxes. Entry tax. Yes, district wise varies, sir, area wise vary. So suddenly we cannot make into one, sir. And one more thing, sir, we cannot impose salt, essential products and luxury products same tax rate. So initially we had a thought, let's have a modified, matlab simple, implementable, because So I was thinking that let's make most essential goods which are very much consumed by the poor people free from the GST. Yes, sir. And remaining goods little bit maybe 12% or 15% slab. in the long, even Arvind Subramanian committee, there are so many committees say same view, sir. For essentials, keep zero slab, and mass consumption, keep 12 to 15%, sir. Now, if you see this one nation, one tax, one market right now, sir, initially we had multiple tax rates. Slowly we are reducing the number of items from 28 to now 18, sir. Now we are planning to bring to 5 and planning to bring 18, sir. Right. So automatically we are removing 2 slab rates now. Correct. So virtually we have 3. So after maybe 5-6 years, we may review once again. We may have one common tax rate also. Right. That is so that we can remove the confusion. And then after few years, only GST remains and income tax is abolished. So already we are right now, sir. We make up to 12 lakh income. There is no income tax, sir. Very few Indians earn no much money. No. सर इसमें और लेकिन मैं बोलूँगा सर एक चैलेंज है इन दिस वन नेशन वन टैक्स थिंग जो आई होप फ्यूचर रिफॉर्म में ठीक हो. Sir, we have not included petroleum product and electricity, Right. land, Liquor. and liquor for human consumption. अब ये चारों सर जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है. लेकिन सर इसमें अब जेन्युइन कॉजेस भी हैं. स्टेट गवर्नमेंट्स के मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सो दे आर नॉट So अग्रीइंग. they have the separate excise duties. हाँ, एक्साइज ड्यूटी. लेकिन सर इसमें दिक्कत क्या है दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लैंड आर 3 मेजर इनपुट्स. कुछ केसेस में अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज एन इनपुट, लेकिन बट अदरवाइज ये 3 तो सर मेजर इनपुट है. अब सर है क्या दैट इफ दीज 3 मेजर इनपुट्स आर स्टिल टैक्स्ड सेपरेटली बाय स्टेट, तो सर जो जीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट करके वन नेशन सिंगल टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट हटाने की बात है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है. अच्छा, इसमें एक और चैलेंज मैं देखता हूँ कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आइटम्स हैं, हाँ. अगर उसमें आपने सेम टैक्स फिक्स कर दिया, कल के दिन आपको किसी कंट्री को काउंटर बैलेंस करना है, तो उस काउंटर बैलेंस के लिए हो सकता है आपको एक्साइज ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी कुछ ना आपको चेंज करना वो चेंज करना पड़े. या फिर सर एक हमारे यहाँ सिस्टम है जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स बनाने का, दैट एक्सपोर्टर्स विल पे द टैक्स बट गवर्नमेंट विल कंपनसेट. पर सर उस केस में हम WTO में हार जाएंगे केस. तो दिस वी नीड टू improve, no doubt. Okay. Reddy ji, to the technology, how this modern technology has played role in implementing the GST and how, yeah. Yes, sir. Already right now, if you see India's taxation structure, sir, you might have heard some stories. Some people got a GST notice, sir. So now already government is tracking by using AI and big transactions and their Aadhaar card, PAN cards, now mobile numbers are linked also. So now they are taking multiple sources, sir, and even in both direct taxes as well as indirect taxes. Coming to the indirect taxes right now,
we have a GST network, sir. Right. So traditionally, right now, 50% owned by the states, 50% owned by the center. So now everything, sir, like paying the GST, filing the returns, getting the input tax. No, there is no human intervention, sir. But right now there are some areas where manually they interfere. But now government want in GST 2.0 completely technological driven, automated, so that we can reduce the discretionary power tax officials. Right. We can reduce the corruption also. Otherwise, nowadays what happens, sir? Sometimes they want to take revenge against a small business. Correct. It happens in democracy. This has been misused in the past. Yeah, that is the reason. So e-invoicing and e-waybill, they are the very good initiative of using technology. Sir, right now we can reduce the what you call, sir, smuggling, sir. Right now you are carrying a product, sir, worth of 50,000 above example. Now you must carry e-invoice, sir, electronic. Otherwise, sir, I am a truck driver. You are the owner, sir. Imagine I am moving from one state to another state. In between they stop me. I don't have much awareness. Now there is an SMS. I'll show, look by. I am carrying my invoice or online bill. So I no need to stop, sir. Indirectly we can reduce the logistics cost also. We can even tolls, etc. Sir. There is a lot of benefit, and even we can reduce the overall cost of the product also. We can reduce the diesel petrol consumption also. So in the long run, sir, we can reduce the logistics cost to GDP. Even to promote our exports also. We can attract more investment also. So indirectly, the technology utilization, the tax collections, tax assessments, tax refunds has a multiplier effect in economy for the consumer aspect to business point of view, even government also, sir. एक सर अभी proposal भी दिया है tax department में that in Ministry of Finance ने that they have created a bot called Gibbon. तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि this bot will be singularly responsible for tracing. कि सर मान लीजिए किसी ने GST फाइल किया X रुपीस का और इनपुट टैक्स रेट की वजह से वो तो करना पड़ेगा और इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं बिल्कुल कम, तो कहते हैं फिर वो बॉट जो है वो उनको ट्रेस कर लेगा कि तो सर that will help in income tax also. After implementing the AI, it is very difficult to escape. Yes. And this will bring transparency, accountability both. Yes. उसमें से बस एक ही चीज है, दरअसल अभी भी हमारा रूरल एरिया जो है there is a heavy cash economy there. और कुछ जगह है सर जैसे गोल्ड मार्केट या फिर रियल एस्टेट मार्केट, वहां भी वेरी हेवी कैश इकोनॉमी है, तो अगर हम उसे कंट्रोल करें, आई बिलीव दैट कि अगर real estate has to be controlled and to be brought into the net of the taxation. I think the tax rates have to be come. Yes sir. एक तो अभी सर एक स्टैम्प ड्यूटी का जो कंसेप्ट है सर, स्टैम्प ड्यूटी एट 5%, 6%, सर कॉलोनियल एरा कंसेप्ट है. And this is not only 5-6%. You see the states like Madhya Pradesh, it is 9-10%. 9-10%. और सर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाती थी हमसे पैसे लेने के लिए. अब सर हमारी सरकार ने भी नहीं छोड़ा, ये पता नहीं क्यों. मतलब ग्लोबली सर दिस रेट इज 0.25%, 0.5%. I think the government wants the revenue resources, and if they get more revenue from the GST, I think the other taxes will come down. Plus sir, there is another suggestion they can take, that they can increase the tax base by including more people in earning category. सर अगर ज्यादा ease of doing business करें, business बढ़े, तो सर अपने आप more taxes can be earned. विभास जी, जो अभी तो मोदी जी ने अनाउंस कर दिया 15 अगस्त को कि देयर विल बी दिवाली तोहफा या बिफोर दिवाली, लेकिन डू यू थिंक दैट दिस इज द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट और द फाइनेंस मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, और देयर इज ए सेपरेट मैकेनिज्म हु डिसाइड्स हाउ टू रिड्यूस द टैक्स, GST, slabs or rates? What is mechanism? So sir, mechanism is two-step procedure. First step, the cabinet will clear the proposal, जो सर कल हो गया. That cabinet has cleared the proposal कि ये करेंगे. Next step, which is the most important step, cabinet के क्लियर करने से कुछ होता नहीं है वैसे इस केस में, and it's a very good thing sir. यहाँ मैं एक बच्चों को एक और बात बताऊंगा क्योंकि सर अखबार उनको थोड़ा उल्टा बता देते हैं. तो सर नेक्स्ट स्टेप ये है सर उसमें, that कैबिनेट के क्लियर करने के बाद it will go to the GST council. अब GST council की मीटिंग ये एक्सपेक्टेड है that the central government will call in September. एंड सितंबर में ये मीटिंग कॉल करके एवरी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें एक रूल है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज 33% वोट एंड ऑल द स्टेट्स गवर्नमेंट टुगेदर हैव 67% वोट्स. मुझे ऐसा लगता है सर दैट दिस प्रपोजल विल बी पास्ड इन जीएसटी काउंसिल आल्सो बिकॉज ऑफ टू रीजंस. वन सर, इन मेनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर सेम पार्टी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. करेक्ट. तो सर एनडीए की ही सरकार है. But equally importantly, sir, none of the parties would like to be seen on the side where they are opposing reduction of tax. तो सर मुझे ऐसा लगता है ये पास हो जाएगा, बट जीएसटी काउंसिल इज द की. उसमें सर एक और बात भी है दैट आफ्टर दिस गेट्स पास देन इट हैज टू बी नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, रेड्डी जी, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दी
sharing of the GST between the center and state or center and the union territories? What is the mechanism once the tax is being collected? Because we have seen sometimes GST has the SGST, CGST or IGST. So can you explain this? In simple terms, sir, it is a destination based tax. Right. Let's say, sir, it is manufactured in Uttar Pradesh, selling in Uttar Pradesh only, then we impose the GST, sir. There are two components, central GST, state GST. Center will take 50%, state will take 50 UP, sir. Correct. If it is sold in Bihar, sir. Now here my question is that 50% collected at the by center, will it be directly credited to state 50% and center 50%? CGST, SGST? Yes, sir, 50-50. It's directly credited in it is not part even finance commission distribution, sir. Okay. Now income tax, sir, yes. finance commission will decide what formula they should follow to distribute to the states. But here 50-50 everywhere, sir. Right. Yeah. And now coming to the different interstate transfer. IGST, sir. IGST. It is manufactured in one state, sir. And sold in the other state. Then we impose IGST. Again here 50 will take by central government, 50 by the consumption state, sir. It means the producer state is not getting anything directly here. Yes, sir. So how this producer state will be benefited from the work? Consumption will increase, no, sir. Yes. So once production take place, they have income. And one more thing, sir, now they increase their selling. Once you are manufacturing some products, sir, once input cost etc. reducing to you, then your profit margin increases. But I believe there can be one more reason. To produce any item or any product, there is a work before that where you are getting raw material. Yes, sir. And there can be interstate or intrastate. Sir, it is manufactured something in produce Punjab, but manufacturing in Gujarat or Maharashtra or Karnataka or Tamil Nadu. 40 to 45% of manufacturing comes these four states only, sir. But they access raw material across the country. So indirectly it is benefiting the producer state also. इसमें दो बातें मैं ऐड करना चाहूँगा. Please. पहला सर जो GST भी कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, उसका भी 42% स्टेट को चला जाता है. 50% का? हाँ सर. अच्छा. मतलब वो फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन से. मतलब जैसे 100 रुपीज का GST कलेक्ट हुआ, 50 goes to state, 50 to center. Right. Out of 50 that center gets, another 21 will go to the states. 21. Okay. तो टोटल सर आउट ऑफ 100 71 इज विद द स्टेट. और सर दूसरी बात सर जो ये भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, जिसको सर हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में सप्लाई चेन बोलते हैं. Yes. So sir, if I am a producer of say sir this cardboard, right, then sir I am producer. This cardboard might be sold in Bihar. I produced it in Uttar Pradesh, but this cardboard will have 20 components. Correct. And I am the purchaser of those 20 components. Right. So that goes to the producer state. Yes sir. हाँ. इसमें एक और जगह बहुत confusion होता है लोगों को कि there can be digital services like even e-education, online education. Yes. Where the consumers are at different states, and the service provider is in one particular state. Let us say we provide the services from Delhi, and our students are in the different other states. Yes. So in this case, what is the mechanism of the revenue sharing? Sir, again IGST comes in, sir. Okay. That students ne pay kiya, things have been received in Delhi. So next IAS pays it to the Delhi government. Correct. तो सर इसमें क्या है, सर्विस हैज बीन क्रिएटेड एट नेक्स्ट आईएएस. तो सर यहाँ डिजिटल सर्विसेज में ये रूल है दैट वेयरएवर द सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड बिकम्स द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. Right. So in the case of the right. Reddy ji, coming back to you. Yes. So achievements of the GST, how do you see till now? Sir, if you see the overall sector wise, agriculture, sir, they are exporting better right now because exports are zero rated. Number two is the manufacturing. Overall manufacturing to the GDP may not increase much, but few sectors like electronics right now, mobiles, pharmaceuticals, textiles, the traditionally neglected industries, now they are getting, that is called labor intensive industries. Number three, sir, even traditionally goods are taxed very high, sir, in India. Services are taxed less. Now they have brought uniformity among the goods and services. Even we are attracting more FDI also. It improved ease of doing business also. And sir, ultimately the impact on consumer, there is a cascading effect, sir. पहले होता है टैक्स को ऊपर टैक्स होते रहता है, sir. Now overall burden reduced, so inflation also reduced. Even there is a view after this GST 2.0, even there is a 40 basis points decline in our consumer price index in combined also, sir. Indirectly, it impacted on growth rate, our GDP improved, inflation reduced, exports are increasing, labor intensive sector are benefiting, and even regional disparities are lowering, because sir, in ease of doing business, we take multiple parameters like land acquisition, labor loss. One important component is the taxes. Now we are liberalizing the taxes, both direct as well as indirect. So GST play a very important role in manufacturing. So in all these areas,
there is a multiplier effect in our economy because of GST, sir. विभास जी, मैं क्वेश्चन ऐसा जिसे मैं लेना चाहता हूँ, द क्वेश्चन सेज दैट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिपोर्टिंग ऑफ टैक्सेस इंक्रीज्ड, बट एट द सेम टाइम इट इंपोजेस चैलेंजेस फॉर वल्नरेबल एंड एजुकेशनली नॉट इक्विप्ड व्हाइल फाइलिंग टैक्सेस। सर ये सही बात ही नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। जो भी पूछ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उनका नाम नहीं देख पा रहा मैं, बट सर इसके अंदर मैं इसलिए बोलता हूँ ये सही बात नहीं है, बिकॉज द मेथड ऑफ फाइलिंग was worse in the pre-GST days, more complex, और हमने आपने तो सर फाइल भी किया है, more complex, more tedious। लेकिन सर जीएसटी के वक्त दिक्कत इसलिए आई बिकॉज when a new tax gets introduced, automatically people take time to adjust to their filing method। अब सर अगर हम देखें with GSTR 3B being synchronized more, now the tax payment has become much more less hassling। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको ये ना सोचे कि ये बढ़ रहा है टैक्स। and one more student Asu Singh from Ujjain is asking, sir please tell us the effect of the no tax or nil tax or smaller tax in the health insurance। यस सर, ये एक चीज है सर दैट जीएसटी में क्या है सर दैट इफ यू चार्ज अ लेस टैक्स और निल टैक्स में दिक्कत क्या होगी सर दैट आई विल नॉट, इफ आई एम पेइंग निल टैक्स ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, आई विल नॉट बी एबल टू चार्ज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन माई इनपुट, क्योंकि सर मैं कुछ टैक्स पे करूंगा वो तो डिडक्ट होगा, राइट। अगर मैं पे ही नहीं, तो सरकार ने ये कहा है दैट let us charge them a minimum 5% tax so that they have some method of paying for input tax credit। करेक्ट। अच्छा, इसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक और मैं पॉइंट रखना चाहता हूं कि द एंड कंज्यूमर लाइक लेट अस से कि फॉर अस द स्टूडेंट इज द एंड कंज्यूमर। यस सर। तो स्टूडेंट ने हमें जीएसटी पे करा, करेक्ट, और उसके बाद हमने आपको चार्जेस पे किए, तो फिर आपने हमसे जीएसटी चार्ज किया और हमने उस जीएसटी का इनपुट ले लिया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द स्टूडेंट, हाउ दे कैन गेट द इनपुट टैक्स? नहीं सर, द कंज्यूमर विल नॉट गेट इट। ये सर दिस स्टॉप्स एट द प्रोडक्शन पॉइंट। पर सर स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिला मैं बताता हूँ सर। जैसा अभी रेड्डी जी भी बता रहे थे कि सर अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा या हमारे पीछे वाले सप्लायर को नहीं मिला, तो ये सारे टैक्स सर ऐड होते जाएंगे एंड फाइनली द प्राइस इन द मार्केट विल बिकम वेरी हाई। तो अगर इफ आई एम नॉट एबल टू get the input, then obviously फिर this मैं सर पास ऑन करूंगा। सर मैंने कुछ खरीदा 100 रुपीज का, हाँ बोलिए प्लीज। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैकेनिज्म है ना सर, इट इज सिंपली जो ऑलरेडी आप टैक्स पे किया सर, दोबारा पे नहीं करना चाहिए। इंटेंशन इज यू नो नीड टू पे 2 times टैक्स, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट जो टैक्स हम पे के वापस आता वो दैट इज नॉट द कांसेप्ट। वैसे भी इसकी डेफिनेशन कहती है डेस्टिनेशन टैक्स, तो डेस्टिनेशन वाला ही तो पे करेगा, अल्टीमेटली विल पे सर। लेकिन जो प्रोड्यूसर बीच में पे किया गया उनको वापस मिलेगा सर। कोई तरीके से ऐसे हम समझ सकते हैं कि सर आई हैव परचेज्ड एन इनपुट ऑफ 100 and paid a tax of 10, then my total input cost became 110। Yes। उसमें से अगर मैंने 20 रुपीज का वैल्यू ऐड किया तो 130, फिर सर उस पर 10% 13% टैक्स दूंगा, तो सर मैं 13 रुपए टैक्स दे रहा हूँ एंड द प्राइस इन द मार्केट विल बिकम 143। रेड्डी जी आपके लिए क्वेश्चन है, सौरभ गुप्ता। आई वांट टू आस्क द compensation used to make the combined taxes to nearly 45%, which you are talking about, yes, the cess. Yeah. So after removal of the compensation cess, will it reduce the taxes for sin goods and automobile sector than the previous tax of 45%? Yes sir। Sir, if government implement, if they keep flat 40% on sin goods and luxury goods, there are some cars, there are some what you call sin products, it become cheaper sir। इसका मतलब कि अभी वेट कर लेना चाहिए। Yes sir। अभी कुछ दिनों के लिए कुछ भी परचेज मत करो, everything is likely to be cheaper। That is called Diwali gift sir। 2 gifts, one is our festivals, one is from GST sir। So Vibhas ji, for our viewers, what would you like to say कि अभी किन किन एरियाज में या किन किन सेक्टर्स में टैक्स बेनिफिट्स होने की ज्यादा संभावना है? सर 3-4 चीजें तो बहुत जबरदस्त रूप से होंगी। एक है सर ऑटोमोबाइल, विदाउट एनी डाउट, उसमें सर इवन दी लग्जरी क्लास, सर उसके ऊपर डाउट है कि सरकार क्या टैक्स लाएंगे, पर सर 45 तो नहीं होगा, इट विल बी 40, दैट इज व्हाट वी आर सस्पेक्टिंग। तो सर इसलिए अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। और सर दूसरा सर क्या है इज सीमेंट एंड स्टील, राइट। तो सर उसमें क्या है हाउसिंग विल बिकम 28 से 18 में आ जाएंगे, 28 से 18 में आएंगे सर। तो फिर हाउसिंग विल बिकम रिलेटिवली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एयर कंडीशनिंग, घर बनाना है तो सब कुछ सस्ता हो सकता है, आपका एसी से लेकर के टेलीविजन तक,
फिर सीमेंट कम एवरीथिंग। डाउन। और सर ऐड वन पॉइंट हियर, Sure. जो ट्रेडिशनली जो हम व्हाइट गुड्स बोलते हैं ना, लग्जरी मानते हैं सर, बट इंडिया जैसा इतना ह्यूमिड टेम्परेचर आजकल, क्लाइमेट चेंज है सर, नो मोर एसी एंड रेफ्रिजरेटर इज अ लग्जरी प्रोडक्ट सर। सो नाउ देयर इज अ रीथिंकिंग इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आल्सो, जनरली वी थिंक ट्रेडिशनली सर गाड़ी होना लग्जरी है, रेफ्रिजरेटर होना लग्जरी है, बट नाउ देयर इज अ चेंज इन माइंडसेट आल्सो बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इनकम एटसेट्रा। नाउ दे वांट टू मेक इनटू 28 टू, एक समय तो मोबाइल रखना भी लग्जरी होता था। यस सर, बट आल्सो इट्स एसेंशियल प्रोडक्ट्स। एक और इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है सर, वट एवर टॉक वी हैव सीन ऑन इट, कि सर अब ये लोग ये बात कर रहे हैं कि अननेसेसरी सिंक्रोनाइजेशन खत्म, डिसिंक्रोनाइजेशन खत्म करेंगे सर। जैसे कहीं कहीं पे जीएसटी रेट में क्या है सर, दैट इफ इट इज अप टू 150 सीसी मोटरसाइकिल देन 18%, अबव दैट बिलो 150 सीसी 5%, तो उसमें सर टैक्स की चोरी बहुत हो जाती है, बहुत होती थी। तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट इनफैक्ट कंपनियां भी प्लान करती थी कि चलो 10 सीसी कम कर दो, टैक्स नेट से चले आओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, हर्षित कुमार पूछ रहे हैं कि इज दिस टैक्स रिफॉर्म बाय द गवर्नमेंट अंडर द प्रेशर ऑफ द ट्रम्प टैरिफ? Sir, see, there's two things, sir. The reform talks began before Trump tariff. But मैं एक बात अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलता हूँ, that when you are facing a challenge, then find opportunity in it. राइट। सर देखिए क्या है, अगर एक साल पहले रिफॉर्म की बात होती या 6 महीने पहले, then opposition, not only political opposition, otherwise opposition would have been there, ये मत करो, ऐसा मत करो, but when people see a crisis, suddenly sir everybody agrees. तो सर उसमें क्या है कि अभी there is a situation, we can use it as an opportunity to pass a lot of reforms. ये मैं बोलूंगा सर. So not necessarily due to Trump, but maybe that can be the catalysis. हालांकि ये इरेलेवेंट है यहाँ पर, व्हाट इज द ओपिनियन ऑन द कैपिटल गेन टैक्स, बिकॉज ये जीएसटी से रिलेटेड नहीं है। सो द नेक्स्ट पार्ट विच इज द इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर यूपीएससी, क्योंकि अभी मेंस होने वाला है, एंड गोइंग ऑन, होने वाला क्या है, ऑलरेडी स्टार्टेड टुडे वाज द एसए पेपर। सो हाउ डू यू सी द टॉपिक ऑफ जीएसटी इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंस, और क्या इम्पॉर्टेंट इसमें? सर मैं तो सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को वैसे कि परसों के लिए जो भी हमें सुन रहे हैं अभी, जीएसटी थोड़ा प्रिपेयर जरूर कर लें। उसका रीजन क्या है सर, दैट द प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट इट इन द स्पीच ऑन 15th अगस्त। बट बाय दैट टाइम यू डोंट थिंक द पेपर वाज सर पेपर वुड बी मेड सर, बट होता क्या है सर, दैट व्हाटएवर ही स्पीक्स इन द स्पीच is already being discussed in the policy circles for 1.5-2 months. उसके सर मेन कंटेंट आते हैं स्पीच में। तो सर मेरा ये सजेशन रहेगा कि 2-3 चीजें बस, रेड्डी जी ने सारा कुछ लिखवा रखा है, जो लिखवा रखा है वो प्रिपेयर कर ले, बस इट विल बी डन। बट सर मेरा ही सजेशन होगा, 1 the benefits of GST, जो हमने अभी आंसर भी किया, challenges of GST, and why reform is needed। अगर ये 3 चीजें प्रिपेयर्ड हैं तो सर Reddy ji, what you would like to add? Right now for the mains na sir, because it was launched in 2017, अभी तक ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा what are the achievements of GST, what else should be made to make better of it sir। ये 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा था। क्या क्वेश्चन था? एक सर कौन सा टैक्स जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया गया एंड सेंटर स्टेट में क्या इंपैक्ट पड़ा, दैट वन क्वेश्चन। अनदर वन जो कॉम्पनसेशन का इश्यू सर कोविड में, दे आस्क अबाउट द कॉम्पनसेशन सेल्स एंड सेंटर स्टेट रिलेशन सर। सो नाउ दे कैन आस्क यू, बिकॉज जो कोई भी स्कीम और पॉलिसी एक्ट कुछ भी लाता हम लोग, वी वेट फॉर द टाइम सर टू सी द इम्पैक्ट, 5 साल 10 साल, सो इट्स ऑलमोस्ट वी स्पेंड 8 years है। सो दैट वी कैन एक्सपेक्ट what are the major achievements of GST. Do you think it is a time for GST 2.0? They may not ask 2.0 as it is, they may ask what else should be done to better off, etc. sir. For Right. main sir, but for prelims sir, it's a evergreen topic sir. जैसा GST council है sir, yes sir they told no, it's a constitutional body है, they can ask it is a like statutory etc. Then sir without center's consent no, GST council में कोई डिसीजन मुश्किल है सर, बिकॉज स्ट्रक्चर ऐसी बनाए लोग 3/4 मेजॉरिटी चाहिए सर, स्टेट से 2/3, सेंटर एज 1/3 सर, so nobody has a veto power. yes. So dear friends, this was the discussion on the GST 2.0. I hope you liked the discussion, and if you have any query please put on the comment box, और आपके कोई suggestions हैं वो भी लिखिए। If you want the PDF of this, please make a request by putting the comment on the comment box, and we will meet in the next episode. Till then, Jai Hind. Jai Hind.